Hello everyone, welcome to Odisha Civils. आशा करछु समस्त भल थिबो जनथन दयारु. So आज geography optionals उपरे गोटे very fundamental topic जोटा कि प्राय तो questions जदि हमें देखिबा कि एई आरी उपरे ही बेस करी पचरा था. In fact, if I say it is very माने क्वेश्चन जदि देखिबा कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप रो आकु बेस करी कि से माने क्वेश्चन पचर थान. And of course it's an useful for your GS also apart from that one. जदि ज्योग्राफी ऑप्शनल हमें देखिबा कि प्लेट टेक्टोनिक्स उपरे समान क्वेश्चन जदि तमे देखिबो ई विगत 5-6 वर्ष भितरे वेरी रिसेंट माने आई मीन प्रीवियस ईयर कि ता प्रीवियस ईयर वेरी 2-3 वर्ष भितरे जदि हमें देखिबा कि क्वेश्चंस पचरा हिचे किंतु से रिलेटेड नै कि so it's basically जदि कहबी कि plate tectonics is a subject of your very fundamental understanding and also जदि तमे एटा भला भी बुझिचो then definitely it will help you out in your mains writing खास करके optionals रे. Now the question is that कि तमे अधिका स्कोर आनिबो केमति एई भलिया क्वेश्चंस पढले. Of course खाली in general हम जानछो plate tectonics एया माने but absolutely तारो again मु सब बळे कहि कि जो भी स्टूडेंट्स देवन they are always मो स्टूडेंट्स मानन कहि कि values aim higher माने at least you should expect at least 80%. जदि तमे 20 मार्क्स अछि it will be your score to be 80 to 85 माने 16-17 रखिया निश्चित रूप आसी परियो. इट्स किछि बड़ जिंस नो. ऑफ कोर्स साइंटिफिक सब्जेक्ट आसीबा बहुत जरूरी नॉलेज को एनरिचमेंट हबनी. तो हमें देखिबा पावर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. तमे देखुछो एथरे कि पावर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हमें हाउ विल प्रोसीड पावर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. गुड इवनिंग गॉड ब्लेस यू. गुड इवनिंग संगम. तो प्लेट टेक्टोनिक्स पूर्वरु हमें जानिबा कि फर्स्ट कि प्लेट टेक्टोनिक्स करे कोन वर्ल्ड रे यार इंपोर्टेंस कोन माने जदि हमें देखिबा कि जियोलॉजिकली बेसिकली सब्जेक्ट है जियोलॉजिकल ऊपर कि जियोलॉजिकली व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स माने कोन प्रथम हैला द मोशन ऑफ द प्लेट जानिबा प्रथमे. आंसर देखो कहिबाटा बड़ जिंस नै जो सब्जेक्ट ऊपर लेखिबाटा बहुत इंपोर्टेंट. नॉर्मल गोटे जीएस रे तमे आंसर लिखबो गोटे ऑप्शनल भीतर आंसर लिखबो डेफिनेटली इट विल हैव एन ह्यूज इंपैक्ट. Okay, our difference should be there, otherwise you cannot get marks. Number 1 प्रथम देखिया पूर्व हमें फर्स्ट देखिबा the theory of plate tectonics. जदि देखिबा the theory of plate tectonics was first published by W.J. Morgan. तमे अंक विषय देबा बहुत जरूरी. W.J. Morgan he was basically a geologist. Okay, US रो W.J. Morgan he first जदि तमे देखिबा कि फर्स्ट हम से पब्लिश करितले कि W.J. Morgan about the talks about the book's theory of plate tectonics. But ता पूर्व प्लेट गोटे जदि देखिबो कि किए करथिले प्लेट व्हाट कॉइन किए करथिले दैट इज विल्सन जे विल्सन राइट. बिफोर दैट वन लेट मी नो हमें लिखला वाला आंसर कोन लिखबा कि व्हाट इज प्लेट. प्लेट माने कोन बुझछो. प्लेट भी त हमें जो प्लेट खाउछु से प्लेट ना नॉर्मल गोटे स्लैब प्लेट सेटा भी कहैबा. तो जियोलॉजिकली कोन डेफिनेशन बेसिकली इट इज अ रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब. तुम लिखला वाला कोन करिवो नॉर्मल मु सबले कहि के अंडरलाइनिंग ता बहुत इंपोर्टेंट. कोन लिखबो रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब. लिथोस्फियर वेयर इन लिथोस्फियर सिंस वी नो हमन अछु कोठी लिथोस्फियर रे हम जदि देखिबो कि we are in the biosphere here. This is the biosphere, right? हमने एठी रहउछु biosphere. तो biosphere कहा कब नहीं छि लिथोस्फियर एटमॉस्फेयर आउ हाइड्रोस्फियर ए तीनटा कॉम्बिनेशंस को नै कि तुमर हिछि करेक्ट. ता पूर्व हम जानबा कि हला तो लिथोस्फेरिक स्लैब और सॉलिड एंड रिजिड क्रस्टल लेयर. सॉलिड एंड रिजिड क्रस्टल लेयर. क्रस्ट ऊपर जदि हम जानबा केमते क्रस्ट नॉर्मली वी नो crust is like this one. crust हमर कोटा this is normally हम जानछन this is crust ऊपर this is crust and this is your mantle a percent and this is your core. these are the जोटा कि हम कहू CMC crust mantle और core ए तीनटा वागे. ता पूर्व हम देखिबा कि तमे पढिला बेले मु सब बेले कहबी कि आंसर लिखला बेले तमे साइड रे जदि तमे दो छोट छोट डायग्राम करी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली इट विल वर्क मैजिक. देखो सब जिंस रे जो भी मु यूट्यूब रे जो भी क्लास हमें नबा जो भी जिंस मु करबी सब जिंस रे मन रखो गोटे जिंस तमे सिखिया को इथरे चेष्टा करिवो कि ओवरऑल गोटे आइडियाज हाउ टू प्रोसीड राइटिंग रे. ठीक अछि. अच्छा द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब और सॉलिड एंड रिजिड क्रस्टल लेयर आर टेक्निकली कॉल्ड द प्लेट्स. तो हमें जानले कोन प्लेट्स को गुडा
ए जो सॉलिड आउ रिजिड स्लैब गुड़ा है रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब अच्छा द होल मेकानिज्म मीन्स इट्स फॉर्मेशन जदि हम देखिबा कि कोन तार द होल मेकानिज्म ऑफ फॉर्मेशन माने केमती फॉर्मेशन हला द नेचर कोन तार नेचर माने इधर इट इज वेरी मच विस्कस सॉलिड हला विस्कस और लेस विस्कस ता नेचर ता जदि सिलिका प्रेजेंट थो ताले एटा मोर विस्कस जदि सिलिका कम प्रेजेंट थो ताले एटा लेस विस्कस राइट एंड plate motion and their resultant reaction combinedly known as theory of plate tectonics तमे plate tectonics जदि पचार जदि if you are missing such points तो definitely there is up to no use लिखिबा बहुत जरूरी otherwise you cannot get back तो जदि तमे आंसर लिखु छे बळे definitely प्रथम impression तमे कैरी करनु छ कार एग्जामिनर प्रथम impression तमे मेंस लिखु छ ये इस बंदे को पता है यार से भलो जानि छी लेखा जानि छी से definitely it will work magic normally हला समस्त जानी थांती किंतु प्रेजेंटेशन कला को सेटा भूल है डेफिनेटली नेक्स्ट द प्लेट्स इंक्लूड कौन करे नॉट ओनली द कंटिनेंट्स केवल कंटिनेंट्स भी नो हला अनलाइक कंटिनेंटल ड्रिफ्ट जेंति मु लिखि दी हला कंटिनेंटल ड्रिफ्ट जेंति कहथले ओनली कंटिनेंट्स आर देयर बट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जी की प्रथम थर इते वाइड गोटे देइतला कि नो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट रे वेगनर कौन कहथले वेगनर एटा कहथले कि इट इज ओनली इंक्लूडेड द कंटिनेंट्स बट ई कौन कहला also the oceans as well जदि हमें देखिबा हला प्लेट्स माने कोन बोथ प्लेट्स माने कोन कहला थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इट टॉक्स अबाउट both continents and oceanic plate continental plates and oceanic plates दीटा जंग and oceanic plates या ऊपर ए जिंसटा कोन कहला कि वेगनर जो अल्फ्रेड वेगनर जो थिले कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एटा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से कोन कहले नो प्लेट्स जो मूविंग करछि ओनली द कंटिनेंट बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रथम थर पई 1967 मसिया जेतले पब्लिश कले डब्ल्यूजे मोर्गन से फर्स्ट टाइम कहले नो इट वाज नॉट ओनली द कंटिनेंट्स आल्सो द oceanic plate they are moving for example Pacific plate let us know okay continental and they are the continental and the oceanic plates just look at the map here मैं गोटे मैप देखौची just look at the map here भल भाव बुझ बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा डेफिनेटली ट्रिक्स बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे काम करे खाली आमे को आमे निजे निजे खुशी करिया पे टाइम पळौची बट फाइनली देखला को वर्ष ऊपर वर्ष पळौची सो जानिबा बहुत जरूरी सो इठी जदि तमे देखुचो वर्ल्ड मैप रे कोन अछि दिस इज योर दिस आर द कंटिनेंट्स लाइक नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एशिया यूरोप हैला एशिया यूरोप ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अफ्रीका एटा सब दिस इज द वेरी नॉर्मल सो वेगनर हाइपोथेसिस कौन कहला डिस्टिंग्विश जदि पचारिबो देखो कौन कहले कि ओनली द कंटिनेंटल प्लेट्स बट एठी जे तमे गोटे कोन देखुचो एठी गोटे मेजर तमे देखुचो एठी मेजर एठी तमरो ओशियनिक प्लेट योर पैसिफिक प्लेट जो इफ यू लुक एट हियर दिस इज योर मेजर पैसिफिक प्लेट ए जो बड़टा तमे देखुचो दिस इज नथिंग बट योर पैसिफिक प्लेट कौन कहली पैसिफिक प्लेट this is completely इतने बड़ो गोटे प्लेट पैसिफिक प्लेट कैन यू इमेजिन पैसिफिक प्लेट बहुत गुणा बड़ो एशिया यूरोप और अफ्रीका टू इतने बड़ो प्लेट सो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ए जिंसटा कहला कि एटा केवल तमरो नुह कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहला कि एटा केवल द कंटिनेंट्स आर नॉट ओनली मूविंग आल्सो द ओशियन ए जिंसटा तमे हाईलाइट करी राइट फॉर एग्जांपल इन पैसिफिक प्लेट अच्छा नॉर्मल प्लेट तो हम जानि कॉन्टिनेंटल बट पैसिफिक प्लेट गोटे बहुत बड़ो ह्यूज प्लेट राइट नाउ लुक एट हियर वर्तमान जदि हम देखिबा कि नॉर्मली जियोलॉजिकली कौन कौन सब आज खाता पेन धरिक बस आ से अनुसार तुमको इजी भी रहइबो खाता पेन धरिक बस एंड आल्सो रहइबो संघमित्र आई होप यू आर फाइन ओके गॉड ब्लेस यू संघमित्र आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग यू इट YouTube बहुत पुराना स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर for connecting thank you so much संगमित्र अच्छा तो वर्तमान नेट देखले कोन जनरली द प्लेट मार्जिन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर थ्री फॉलोइंग हेड्स तीनटा फॉलोइंग हेड्स रे प्लेट मार्जिन्स नंबर 1 दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स दैट इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैला कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हम जानली सेकंड वन डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज थर्ड वन parallel plate boundaries or transform fault boundaries ये तीनटा जिंस आज हम पढ़िबा अच्छा रिप्रेजेंट केमती करिबा
प्रथम है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आउ पैरेलल ठीक अछि प्रथम मु धरछि 1 बाय 1 करके कोन धरिबा कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज तुम ये डायग्राम रे कोन देखछो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट आउ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हैला कंस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंट मन रखो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट आउ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एठी तुम कोन देखिलो कंस्ट्रक्टिव माने जोटा हला डाइवर्जेंट जनरल है तमरो कि कंस्ट्रक्टिव ठीक अछि 1 बाय 1 देखिबा वेट लिखुची केमति तुमे प्रेजेंट करिवो हला स्टे विथ मी आ लिखिबो नॉर्मल मु बेसी मु लिखिबो केवल ट्रिक्स कहया पे अछि ओनली द ट्रिक्स हाउ इट हेल्प्स यू राइट कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कौन लिखली कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज एरे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज राइट कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज और डाइवर्जेंट प्लेट मोशन कौन लिखली डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट मोशन एमती तब लिखियो राइट वेरी सिंपल केमती नबो प्रथमे डायग्राम तुम दबो प्रथम करिवो डायग्राम करिवो कोन करिवो कि एठी लिखिवो दिस इज डाइवर्जेंट राइट दिस इज योर डाइवर्जेंट प्लेट्स आर एठी कोन लिखिलो ठीक अछि सर टिकेट एटा प्लेट्स आर moving away from each other ei jaga constructive eti kon hobo eti dekhili this is your magma eruptions hochi eti dekho magma eruptions hochi this is your magma comes out eti likhila magma comes out au eti likhila plate 1 au plate 2 eti normal kon likhibo plates are moving away very simple mu kali just तुमको गोटे स्केलेटन कहि दो स्केलेटन कहले तुमको इजी रहे प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम each other or opposite each other that means opposite motion एटा away from each other माने कोन एटी opposite motion yes or no opposite motion एटी तुम देखुछो opposite motion रे प्रथम कथा सेकंड हैला मैग्मा स्पिल्स होची अच्छा यार नेचर कौन जदि तुम देखिबो कि यार डाइवर्जेंट प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर नॉर्मली इट स्ट्रेचेस आउट हैला कौन रहइबो नॉर्मली नेचर जदि देखिबो कि हैला इट स्ट्रेचेस हैला इट स्ट्रेचेस आउट और एंड रिजल्टेड कौन हुआ पई रिजल्टेड the increasing surface area resulted an increase of surface area yes or no agreed yes or no मते को अरे जेतले गोटे अपोजिट डायरेक्शन में टाणी होउची तो कोन हबो तमरो निजर माने एरिया टा बढ़िबो कि नै वेरी गुड संग मित्र वेरी गुड वेरी नाइस ओके हला तमरो सरफेस एरिया टा बढ़िबो कि नै दैट इज व्हाट इट हैपेंस हियर राइट दैट इज व्हाट इट हैपेंस हियर स्ट्रेचेस आउट अच्छा कौन हुए जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कौन अच्छा एटी तब लिखिबो मोस्ट कॉमनली नोटिसेबल कोठी मोस्ट कॉमनली नोटिसेबल इन अटलांटिक ओशियन राइट अटलांटिक ओशियन एटा प्राय देखा जाए कोटा कंस्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्जेंट माने डाइवर्स दीटा ऑपोजिट डायरेक्शन तुम एट लिखो डायरेक्शन टा वेरी हैला प्रथम बहुत इंपोर्टेंट डायरेक्शन को हम शो करियो नेक्स्ट पुनी कोन देखिबा कोन आ भितर प्रोड्यूस हुए केमते आंसर लिखला बेले तुम केमते 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ओमिट करो डायग्राम करिवा बहुत जरूरी दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट आमे सब बड़े पिला बहुत पछन सर मु 3 पेज लिखिछि अरे भाई तुम 3 पेज लिखिछ ता भितर मसला काई मटेरियल जदि नथिबो कंटेंट नथिबो हाउ यू एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स नेवर सेकंड कौन रहिबो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कौन जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कौन रहिबो प्रथम हैला क्रिएशन ऑफ आइलैंड्स क्रिएशन ऑफ islands
ता पूर्वरु एटा मु सेकंड पॉइंट रखले फर्स्ट हला कि प्रथम हला क्रिएशन ऑफ मिड ओशियानिक रिज सबुठ गोटे स्पेक्टाकुलर फीचर हला मिड ओशियानिक रिज फॉर्मेशन हुए प्रथम कथा मन रखता मिड ओशियानिक रिज टा इतर फॉर्मेशन तमे एटा जदी मिस करछो डेफिनेटली तमे मार्क पाइबो काहे कि जेते बेले गोटे फाट पड़े नॉर्मली जेते अटलांटिक तमे एठी देखुछो मैप रे सॉरी एठी जदी तमे मैप रे देखुछो हला दिस इज योर अटलांटिक पूरा अटलांटिक टा गोटे स्ट्रेच हे कि जाईछि काहे कि ना एपट को मूव करछि जस्ट लुक एट हियर नॉर्दर्न अटलांटिक हो कि सादर्न अटलांटिक हो पूरा माने एपट को एपटे सादर्न अटलांटिक की रहिला ब्राजील और अफ्रीका आ एपट रहिला नॉर्थ अमेरिका यूरोप ए माने कंप्लीटली स्ट्रेच होतन तमे देखिवो ए पूरा प्रोसेस रे अटलांटिक ओशियंस रे गोटे रिपल मार्क हेछि इट जस्ट लाइक एन एस शेप कर्व जस्ट लाइक एन स्ट्रेच जेतले हेछि बडी डायग्राम रे कलर चेंज करछि इट जस्ट लाइक एन एस शेप कर्व it is because of why this S shape curve ये जो S shape curve टा formation है this is because of the stretching please make a note of this जेहेतु तो स्ट्रेच है से S shape curve टा जोटा तुम पैसिफिक रे बिल्कुल भी नहीं भूल ले जदी तुम एटी आंसर रे लिखला बेले तुम जदी एटी लिखि देलो कि नहीं सर एटी हमें भूल रे अटलांटिक जगह रे हमें पैसिफिक लिख दु ताले एग्जामिनर हैव रॉन्ग बट इंप्रेशन आसो इंप्रेशन टा बहुत जरूरी हला ऑप्शनल पेपर रे इंप्रेशन टा बहुत जरूरी कैरी आ जो तुम प्रथम दीटा जो भी आंसर तुम लिखुचो कैरी फॉरवर्ड करछो डेफिनेटली बहुत जण कहते कि से प्रथम आंसर हमें जोटा आसी लिखे मतलब हां यस डेफिनेटली करो सेटा बट एटा केबे भी भाबी डरियोनी कि प्रथम आंसर टे भल लिख परे तापर आंसरडा मार्क भल लिखि से मार्क मिलियो नो सेमते बिल्कुल भी हला तमे जेमती करिचो डेफिनेटली you will pay for that one definitely will get good scores according to your presentation second thing mid oceanic ridge mu कहली creation of islands and the mid oceanic ridge एटी मु देखिली राइट आउ तापर एटी कोन लिखिबो कि there is an आउ कोन रहइबो हला आउ कोन रहइबो mid एंड islands जो island रो एग्जांपल किए आउ एटी गोटे पॉइंट मु चालली कि S shape ripple mark is due to the stretching of it due to the expansion of the continents is due to the expansion in the Atlantic Ocean ocean surface Atlantic Ocean surface both S shape तामाने इटी तमे importantly इटी देखे देला कि because of this reason Atlantic S shape I would always suggest whenever you write please make a note highlight means underline करो underline करले ही बहुत सारे important रहे underline करले तमे you are helping the examiner okay so इटी हमें कौन लिखले जो तम रहिला islands गुडा किए फॉर एग्जांपल किए अफ्रीका कोस्ट रे मुनेबी केप वर्डे हला अटलांटिक रो केप वर्डे नियर स्पेन देन मेडिएरा ठीक अछि मेडिएरा ये भी स्पेन रो से आउ रहइबो देन एपटे के रहइबो सेंट हेलेना तमे देखो सेठी अटलास रे पूरा देछि सेंट हेलेना देन त्रिस्तिना दा चुन्ना एटा सब इंपोर्टेंट त्रिस्तिना दा एटा सब ना माने हैबिटेबल आइलैंड त्रिस्तिना दा चुन्ना एटा सब मैक्सिमम देन एपट रहला कि एजोर आइलैंड देन बर्म्यूडा देखो देन बर्म्यूडा आइलैंड ए पांच छटा लिखि दे दैट इज एनफ हैला बट मन रखो ए जो आइलैंड गुडा ठीक अछि ए जो सब तमर अछि आइलैंड्स गुडा दीज आर हैबिटेबल आइलैंड्स तुम सेठी आउट के बढ़ी के लिख परियो जदी धर 20 मार्क 50 15 मार्क कंटेंट जदी तम पाखरे बहुत अधिक अछि you should know how to stretch it right जदी फॉर एग्जांपल्स मु कहि बर्म्यूडा इज वन ऑफ द वेरी फेवर्ड destinations लोक जानते सेठी टूरिज्म पई सेठी रहंती ऑफ कोर्स बर्म्यूडा विषय हमें देखि चुकी अंकल स्क्रूज रो केमती देयर आर सो मेनी डिज्नी कार्टून सीरियल अछि तो नॉर्मली बट नॉर्दर्न एटा सब देखो ता भितर यदि तमे और एक्सपेंशन कर लिख परियो यू कैन राइट इफ यू हैव नॉलेज
हैला टिके अधिका जानिचो डीपर देन तमे आकु नॉर्थ अटलांटिक कोटा साउथ अटलांटिक कोटा लिख पारे फॉर एग्जांपल मु कहबी बर्मुडा आ एजोर है नॉर्दर्न अटलांटिक त्रिस्तिनिदा चुना आ सेंट हेलेना हैला साउदर्न अटलांटिक इक्वेटर तळु को छन माने इक्वेटर ऊपर को छन right. So this is what the constructive plate boundaries where the plates are moving in a opposite direction samane jaउछन हैला they are moving away from the each other it लिखिला opposite direction or opposite motion whatever. Next पुनी कोन आसीबा ता पूर्व हम कोन लिखले एटा सरला प्रेजेंटेशन सेकंड है destructive plate boundaries or margin or convergent एटा मेन कोन लिखले सेकंड रे destructive plate boundaries ठीक अछि destructive plate boundaries है destructive plate boundaries or convergent motion convergent plate motion ठीक अछि कोन दबो इथरे प्रथमे फर्स्ट अगेन डायग्राम देले कोन देला डायग्राम देखि फर्स्ट अगेन तमे एठी देला ना प्लेट्स आर ठीक अछि दिस इज प्लेट्स 1 प्लेट 2 हैला एडी हमें कोन लिखबा प्लेट्स आर हियर plates are moving हैला plates are moving towards each other हैला thus head on collision एटी लिख परिबो head on collision मन रख जेहेतु प्लेट्स माने परस्पर आड़ को से माने मूव होचंती हैला प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर in the same direction so there is an head on collision हैला moving towards each other परस्पर आड़ so that is why it is destructive सेठी कोन थिला से माने away from the each other हैला एट लिखियो कि thus head on collision and considered as destructive in nature काहे कि again considered destructive in nature it is due to shrinking of सेठी कोन थिला expansion shrinking of oceanic surface area देखो मु तुमको एठी आगुड जिंस हाईलाइट करिवि कि एठी तमे हाईलाइट करी कोन केला श्रिंकिंग ऑफ ओशियनिक सरफेस एरिया की अंडरलाइन करला देखो आई ऑलवेज प्रीवियस वीडियो रे भी मु कहितली पर दिन कि तमे शॉर्ट सेंटेंस लिखो इट शुड बी पावरफुल लंबा पूरा लाइन लिखियो किछि मीनिंग नो सेटा तमे जदी अल्प करे बुझे दुचो एग्जामिनर को यू आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस राइट सो एठी तमे लिखिलो कि डिस्ट्रक्टिव हैला सरला कोन रहइबो पुनी या परे नेक्स्ट रहइबो कि जो एटी कोटी मोस्ट नोटिसेबल कोटी अगेन लिखियो मोस्ट नोटिसेबल इन हैला इन पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन मन रखो कोटी बेसी अधिका देखा जाए पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन रे ही एटा बेसी देखा जाए फॉर योर इंफॉर्मेशन हैला पैसिफिक और इंडियन ओशियन रे ही बेसी देखा जाए दिस पॉइंट शुड नॉट बी मिस्ड राइट दिस पॉइंट शुड नॉट बी मिस्ड नेक्स्ट कोन हुए जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कोन रहइबो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें देखिबा कोन जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कोन रहइबो नंबर 1 हैला प्रथमे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स रे कोन रहइबो राइट formation of प्रथम formation of italic identity formation of trenches oceanic trench हैला formation of oceanic trenches प्रथम एटी देला I will come back to again second again formation of same jinso
formation of islands एठी भी सेठी कोन थिला मिड ओशियानिक रीच एठी कोन रहला ट्रेंच ट्रेंच करी गोटे एमती वी शेप रो दे दो दिस इज ट्रेंच elongated हला वेरी कर्व एंड elongated ठीक अछि माने डीपर एंड elongated एग्जांपल कोन दबा एठी जदी नेबी ओशियानिक ट्रेंच रो एग्जांपल फेमस की मते कहि पारे सबु फेमस मारियाना ट्रेंच वी नो मारियाना ट्रेंच एग्जांपल मारियाना ट्रेंच केते पाखा पाखी 11.02 किलोमीटर such a long stretch Mariana Trench right आउ कोन हे परिबो then your Japan Trench Japan coast रे Kuril Trench then Ryukyu Trench एगुडा सब दे परिबो एग्जांपल सब जगह पैसिफिक ठीक अछि अच्छा आई फॉर्मेशन ऑफ जो तमरा आइलैंड अछि आइलैंड रे की जीवो फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स रे एठी गोटे पार्ट गला आइलैंड रे की जीवो एकदम पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड ओशियनिया रे पॉलिनेशिया मेलानेशिया एंड माइक्रोनेशिया ए तीनटा रहिले एंड माइक्रोनेशिया these are the group of islands Pacific रे we know that one हला एगुडा सब तमे प्रेजेंटेशन कर अच्छा या पूर्वरु कोन हो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री रे गोटे हुए आ गोटे इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा एडिशन थाए देखिया पे ट्रेंचेस फॉर्मेशन सेटा तमे देखि पारे जदि तमे 20 मार्क रो क्वेश्चन अछि you have to be elongate that one केमती हला चलची इतरे एटी कोन लिखिबो एटी लिखि परिबो formation of subduction zone formation of subduction zone है found in such plate motion है subduction zone in such plate motion ठीक अछि where अच्छा एटी कोन हबो तापरे बेटी डायग्राम टा करछि केमति रहइबो फॉर्मेशन प्लेट टा गोटे कोन करे दिस इज द एक्चुअल कॉज हैला दिस इज योर subducted plate right this is your subducted plate and this is your overriding plate right and this is your subduction zone this is your subduction zone right it has overriding plate and this one your subduction zone this one is your subduction zone a part ला subduction zone actually कौन हुए हैला ए subduction zone रे हैला formation of lithospheric slab तमे अटे आरंभ रे पढले हम प्लेट रे एटा हैला कौन this one is much heavier मोइ देखि दोची this one is your heavier plate ठीक अछि sorry मोइ equally in compared to this one एटी मु लिखि दोची this plate suppose एटी मु लिखली px आउ py हैला pxi आउ ए प्लेट ता हला तमर धरो py राइट ए जो प्लेट ता हला px हला योर heavier plate आउ ये प्लेट ता कोन हला दिस इज less heavier हैला less न लखी म लिखुची lighter in comparison to कौन हुए एक्चुअली in comparison to px भला भी बुझो ए जो प्लेट ता px ये बेसी हेवी से जो तमे निजे भाबो जदी हेवी हैला से कोन करिवो तळु को डाउन हे जिवो अरे जदी हेवी हैला अरे निजे कोन बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी इट गेट्स बेंड डाउन बुझो भला बिकॉज़ ऑफ द एडी बुझो छु केवल डायग्रामेटिकली सो कोन हबो because of the gravity एटी हम लिखले because of the gravity it bend down right because of the gravity हैला gravity the heavier weight plate हैला heavier plate okay bend down and
and get cracked हो जाए, cracked and becoming melted in asthenosphere. This is the basic reason तुम लिखी परियो. Don't miss the points in optional paper. Miss कला माने problem हबो. So एटी कौन है? एटी bend है गला. Bend है कि कौन हबो? एटी गोटे तुमरो create हबो कौन? गोटे fracture create हबो. This is an underlying fracture. So this is an fracture create. It है fracture create हबो. Fracture create हबो कौन हबो? तापरे एटी तुमरो कौन हबो? लाभा ऊपर जाएगी, लाभा ऊपर लाभा डिपोजिशन होगा. लाभा comes out from the asthenosphere. This is तले asthenosphere. ये जो जगह टा अच्छी तले की एटा. This is your asthenosphere, right? Asthenosphere. So तमें जो diagram रे जिनसे वड़ा पूरा clearly करेंगे बुझे तो definitely there is no point. Mark पाइबो ही पाइबो. और तमें खाली general way तमें लिखियो GS बढ़िया optional एक और हमको mark मिल रहा है. How come? That is what कि optional माने इतने scoring subject जो पिला अच्छी जो रखुच्च 350 ऊपर पिला अच्छा जो एवरेज 200 रखुच्च तुम लिखबनी केमती रह तुम डायग्राम करबनी तुम पॉइंट दबनी मु एटा कहूनी कि समस्त जान न थांती सेही समय रे हेई न थाए माइंड रे धरे इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल बेटर नो बिकॉज ऑफ द inadequate many things are inadequate lagging हैला संग मित्र सर हैज earthquake also happened due to convergent plates yes definitely बिल्कुल बिल्कुल संग मित्र जदि कन्वर्जेंट प्लेट जो तुम अर्थक्वेक वोल्केनो मु लिखी अर्थक्वेक वोल्केनो बिल्कुल हुए ठीक अच्छे अर्थक्वेक वोल्केनो डेफिनेटली हुए हम देखिए कौन अर्थक्वेक और वोल्केनो डेफिनेटली एटी कौन लिखिबा हमें कन्वर्जेंट एटी अच्छा ने एटी जगह अच्छी ऑलरेडी ता पूर्व में लिखि दे दिस इज सो हम कौन लिखिबा कि एटी आ गुड लास्ट पॉइंट ड्यू टू such motion माने plate motion convergent motion due to such plate motion your earthquake volcanoes are very common consequently very common earthquake volcano are very common in Pacific Ocean region or around Pacific ring of fire एटा ठीक अच्छे दैट इज व्हाट एटी तुम लिखी कि डेफिनेटली विल इनवाइट एटी जो तुम पूरा एंटायरली लिखुछ ड्यू टू सच प्लेट मोशन अर्थक्वेक वोल्केनो बहुत कॉमन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रे एंड जस्ट लुक एट द डायग्राम हियर अगेन जो तुम देखुछ सो हम डायग्राम रे एटी देखो जस्ट लुक एट द डायग्राम हियर विल फाइंड Pacific ring of fire these are the ring of fire and major volcanoes earthquake ए पूरा बेल्ट तुम देखिबो पूरा तुमर गोटे वोल्केनिक बेल्ट और अर्थक्वेक बेल्ट सच एन मैसिव और ए जगह हुए माने कोन हो कि डिस्प्लेसमेंट जेंति फॉर एग्जांपल्स मु कहबी जापान रो बहुत गुडे वर्तमान देखा होची होकाइडो आइलैंड पाखरे जापान धीरे धीरे जापान रो प्लेट गुडा कमी जाउची मेल्ट हे जाउची हैला होकाइडो कोठी होकाइडो जो देखियो जापान रो ए जगह रे हैला ऊपर जापान रो ए जगह होकाइडो Japan, we know that Japan has 4 islands: Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu. Right? So you can give the examples, recent examples. अच्छा, आउ कौन होची? एपटे देखा होची बेरिंग स्ट्रेट पाखरे, हैला? ए जो तमरो अल्यूटियन आइलैंड्स अछन जो अल्यूटियन आइलैंड रो किछि आइलैंड्स मिस हे होचन गले कुआडे मेल्ट हेकी तळको पडुचन. Right? So these are the things common. You can give examples. Also, if you come down to the Philippines area, that the same thing also happens. Philippines रे तो बेसी डिजास्टर जोडा कि तमरा मारियाना ट्रेंच करके एपड़ जो अछ सब बेले आंसर रे तो लिखिला बेले जदी तमे कंटेम्पररी जदी तमे पेपर संगरे कि न्यूज़ संगरे कि तमे एक्वेंटेड अछ छी एग्जांपल तो डेफिनेटली मार्क पाइबो आ काई कमिशन दवन वी कैनॉट ब्लेम ए कमिशंस अथॉरिटी के हम केबे ब्लेम करि पारि बानी राइट जदी हमें निजे जिनछडा हमें निजे निजउत लागि मन रख अगेन हाईली स्कोरिंग पेपर मो पाखरे एमती स्टूडेंट अछंती जो माने मैक्सिमम समान 340 350 आनुछन समान केमते आनले ताले हैला सो डेफिनेटली सो हमें एजिबा थॉर एट्रे कोन हमें देखिले सो we have completed constructive plate boundaries then destructive plate margins हैला now come to the last
that is your parallel plate boundaries transform fault boundaries बेले बेले कोन हुए हैला ट्रांसफर fault boundaries रे तमे देखो एट जदी हम देखिबा right transfer it convergent sala divergent and flat transfer kon plate dita ne slide past to each other se mane kon korante slide past to each other normally hala eti am kon dekhiba here see re parallel plate motion तापर आ गुटे मु एग्जांपल आज बढ़िया देबी कि ए या ऊपर कंटेम्परेरी एग्जांपल सर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ऊपर केमती गोटे इना डेविएशन आसीची हला डेविएशंस ऑफ द रीसेंट वोल्केनो इन इथियोपिया वोल्केनो सेटा आज हम डिस्कस करबी पैरेलल प्लेट मोशन ने कोन हला कि एटी अगेन डायग्राम प्रथम डायग्राम दो साइंटिफिक सर्च गोटे डायग्राम ने कोन देखला हमें हियर इट इज डायग्राम करके प्लेट्स आर मूविंग this is plate 1 and plate 2 एटी कोन लिखिला plates are moving parallel to each other parallel to each other after certain distance the plates hela the plates suppose mati deli the plates mane p1 which hinges mane joda hinge kari jai ta sange lagi jai hinges again which hinges with p2 comes back hence produce massive earthquake so कोडी देखा जाए it is found Pacific Ocean normally कोडी देखिबी Pacific Ocean रे एटा हेइ normally कोन वे गोटे प्लेट सेपटु गला आगुटे प्लेट गला माने एमती छंदी हे गेले एते जोरे टाणी हे गला पुनी सडन से इक्विलिब्रियम पोजीशन को पळे आसी न्यूटन थर्ड लॉ आसीले कोन हो न्यूटन थर्ड लॉ रे जतले ई प्लेट गला एग्जैक्टली आसीला पर जतले इक्विलिब्रियम को बैक करिवो इट इज सिवियर जल्ट हो and of course that's an produce an earthquake. For examples, California earthquake in USA, it was happened in 1919. Okay, once it's in a daytime people are moving as usual the very normal life हठात किना कोन हला बहुत जोर रे माने गोटे साउंड हला एंड ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया रो किछि पार्ट तळकु भी माटी तळकु पळै कैन यू इमेजिन इट इज बिकॉज ऑफ द पैरेलल प्लेट मोशन बट पैरेलल प्लेट मोशन इन कंपेयर टू द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इट इज it is very less happened. Number 1 जीवो कि प्रथम जीवो तुमर कन्वर्जेंट माने डिस्ट्रक्टिव तापर सेकंड जीवो डाइवर्जेंट थर्ड रे जीवो योर पैरेलल एटा सबुड कम हुए जदी देखियो सो एठी हम देखियो कोडी पैसिफिक ऑस्टली फाउंड एट पैसिफिक ओशन रे कोन हबो व्हेन कैलिफोर्निया प्लेट पैसिफिक प्लेट when Pacific plate moves parallel with North American plate एटा हेतला तमरो जोटा एग्जांपल ठीक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट संगे सिवियर जल्ट हेतला प्रोड्यूस हेतला राइट तो डेफिनेटली इथरे बेसिक किछ होइनी ओनली द कैटास्ट्रोफिक इवेंट दैट इज योर अर्थक्वेक बट एटा मन रखो इन कंपेयर टू द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रे एटा सबुटु बहुत कम हुई पैरेलल प्लेट मोशंस ता सबुटु अधिक जदी तमे देखिवो योर कन्वर्जेंट हला कन्वर्जेंट माने योर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हला कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव एटा हला पैरेलल प्लेट मोशंस तीनटा प्लेट मोशंस हला इजीली देखि हेइ जो डायग्राम हेइ जो आराम से आई होप अच्छा या परे जदी मु देखिबी एटी तमे देखुछो सेम डायग्राम रे ओशियनिक रीज ट्रेंच एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हाउ यू प्रेजेंट दैट इज मोर इंपोर्टेंट राइट नेक्स्ट एटी देखो
सेम थिंग एटी देखो तुम सबडक्शन लिथोस्फियर बेनिफ जोन अकॉर्डिंग टू सब ले परियो राइजिंग मैग्मा यू कैन पुट इट डायग्राम केते सुंदर कर परियो एंड ऑफ कोर्स मन को जो मानकर हैंडराइटिंग डायग्राम करिया भलो डेफिनेटली से माने पेपर 1 रे आ सबुथरे निश्चित रूपे ऑप्शनल ले भलो मार्क पाइबो दिस इज माय गारंटी हला इफ यू वांट कम किसी लेखिक आनो डेफिनेटली मो पाके देखाओ डेफिनेटली आई विल से हाउ यू अगेन एनहांस योर स्कोर अच्छा वर्तमान मु अफ्रीकन रिफ्ट वैली केस कोटर नबा गोटे एग्जांपल्स हला अफ्रीकन रिफ्ट वैली हम जानछन अफ्रीका इज स्प्लिटिंग अफ्रीका वर्तमान धीरे धीरे कोन होची हला स्प्लिट करछु ताले एटा को मोशन हबो संग मित्र अफ्रीका जदी स्प्लिट करछु ताले को मोशन हबो हां नॉर्मली जदी हम देखिबा अफ्रीका जो स्प्लिट करूची इट इज एन द डाइवर्जेंट अवे फ्रॉम ईच अदर जदी ए प्लेट देखिबा एक्चुअली कोन होची एबे रिसेंटली देखिबा तमरो 2 मास तळे हला 2 मंथ्स बैक हेली गुब्बी वोल्केनो ए इथियोपिया रे राइट एटी इथियोपिया रे ठीक अछि हेली गुब्बी वोल्केनो हठात किना हैला हेली गुब्बी वोल्केनो एट द रेट कोडी इथियोपिया हठात किना कोन हला ये ब्लास्ट हला हेली गुब्बी वोल्केनो बहुत जोरे ब्लास्ट हला आइला गोटू अफ्रीकन रिफ्ट वैली केवल कैमेरून पाखरे एटी अछि माउंट कैमेरून एटी केबे योर एक्टिव वोल्केनो एटी मु कोन कहली माउंट कैमेरून एटी ठीक अछि माउंट कैमेरून देन हाउ इट कम्स या पछर जदि हम जियोलॉजिकली देखिबा एक्चुअली दानाकिल डिप्रेशन जो अछि इथियोपिया रे हैला दैट इज स्प्लिटिंग तमे तो देखिबो कि एटी दिस आर द करेक्ट फिगर राइट एटी तमे कोन देखछो नुबियन प्लेट कोन रखो नुबियन प्लेट अरेबियन प्लेट आउ सोमालियन प्लेट ए तीनटा आउ थमे कहूची नुबियन प्लेट 1 अरेबियन प्लेट 2 आउ सोमालियन प्लेट ए माने कोन करचंदी ये एपड को पळेला ये एपड तळु खसिला ये एपड को जाउछ ए माने जो फाड़ी ही कि माने पळौचंदी मींस दे मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर एंड दैट इज व्हाट इट टुक्स ए प्रेशर हियर एटी दानाकिल ब्लॉक जो अछि एई जगह रे ही तमर इथियोपिया रे नो हाईली गुब्बी इज हियर दिस इज योर हाईली गुब्बी दिस इज योर हेली गुब्बी हैला हाईली गुब्बी जोटा कि इथियोपिया रे दिस इज व्हाट सडनली ब्लास्ट वर्तमान अफ्रीका आहुरी स्प्लिट हे कि आहुरी मेजर आकार रे आहुरी अफ्रीका स्प्लिटिंग हे सो एटा जदि हम देखिबा कि वर्ल्ड रो फेनोमेना जहा भी होची जो जगह प्लेट मोशन चा होची एवरीवेयर प्लेट्स आर मूविंग माने जदि देखिबो तो अच्छा ए माने मूव करूची कि हाउ द प्लेट्स आर मूविंग फाइनली जदि पचारिबी इट इज नथिंग बट द कन्वेक्शनल करंट और द मैग्मा इनसाइड जो मैग्मा अछि हैला विस्कस मैग्मा और द सेमी सॉलिड जोटा अछि और सेमी लिक्विड जोटा भी जो मैग्मा अछि सी ही एको कोन करछि मेंटल से मेंटल ही प्लेट गोडा को बुलोछि सो एम कोन लिख परिबा द मेंटल्स द लिक्विड हैला द लिक्विड मैग्मा लिक्विड और सेमी सॉलिड मैग्मा लिक्विड और सेमी सॉलिड mantle हैला magma located in the upper mantle कोडी अछि upper mantle नहीं अछि हैला drives these plates here who is the culprit this magma drives the or responsible for the drives the plate और plate motion पई ए माने responsible correct so definitely तमे कोन आंसर जति शॉर्ट रे तमे definitely दोछो हैला तो definitely तमे गुड मार्क्स पाइबो and whatever आज जहां भी हम एटी डिस्कस करले हैला डेफिनेटली तमन के इजी रहइबो ओके ता पूर्व मु आ गुटे डिस्कशन एटी कहि दोची हैला कि as we know here in the Odisha civils we are having geography optional जोटा कि बहुत सारा it's studying for many years we have studied it both UPSC OPSC रो ऑफलाइन और ऑनलाइन दीटा ऑनलाइन बैचेस आर आल्सो गोइंग ऑन जो माने भी इंटरेस्टेड they can ग्रुप रे मते मेसेज करि परिबो राइट 7978090997 ग्रुप रे सब मेसेज करि परि विल कनेक्ट टू मी टेस्ट सीरीज आल्सो गोइंग ऑन टेस्ट सीरीज आल्सो हैला very recently start heichi and we can you can text me over this one चारटा तीनटा सरीची also the GS batches is going on ठीक अछि thank you all of you for all your patience and once again मु कहबी कि जहां भी आज हम पढिले हैला ए जो प्लेट मोशंस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जहां भी जिंस आज हम पढिले डेफिनेटली इट विल वर्क मैजिक जदी तमे ए जिंसटा को तमे निजे जदी तमे शिक्षा को निजे इफ यू आर रियली मोटिवेट टू लर्न तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू जदी तमरो विल पावर अछि डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली लर्न एंड stay connected
we'll again meet with new topic. Jaha bhi kichi any queries, you can directly access to me. Thank you so much. Thank you everyone. Take care. Jai Jagannath. Thank you so much.